Hi everyone, welcome to our YouTube channel Only Mathematics and Nothing Else. So, students, today we are going to solve some questions based on relation and function. So, let me discuss. Number first question is you can look at the screen. If x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, then you have to find out value of x and y. So, simply this is equal sets. Equality sign is here, that is why this is x, this will be equal to 5 by 3 and second y minus 2 by 3 will be equal to 1 by 3. So proceeding it, since the order pair are equal, the corresponding elements will also be equal. X plus 1 equal to 5 by 3, y minus 2 by 3 equal to 1 by 3. So simply we can find out x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3. Simple, x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1 we can do, and after solving we can get the value of x. You can look, x is equal to 2. In the same way, y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3, y equal to 1 by 3 plus 2 by 3, and after solving y equal to 1. So value of x equal to 2 and y equal to 1. Now next question, if the set A has 3 elements and set B has 3, 4, 5, there are 3 elements also, then find the number of elements in A cross B. What would be the elements in number of elements in A cross B? So it is given that set A has 3 elements and the element of set B are 3, 4, 5. So number of elements in set B is also 3. So number of elements in A cross B, that will be number of elements in A and number of elements in B. As you know, number of elements in A and into number of elements in B, that will be equal to 3 into 3, that is PQ. If number of elements in A is equal to P and number of elements in B is equal to Q, then as you know, I have discussed previously that number of elements in A cross B, that will be equal to PQ. So the elements will be 3 into 3, number of elements will be 9. So simple question this is. Next we will discuss another question. Let G be the set having elements 7, 8 and H be another element having element 4, 5, 4, 2. You have to find out G cross H and H cross G. Cartesian product you have to find out. So G P cross Q, simply you can find out element like that in the form of P comma Q. P belongs to capital P and Q belongs to capital Q. G cross H, you can find Cartesian product G cross H, 7 multiplied by 5, 7 multiplied by 4, 7 and 7 2. Not multiplication, only order pair we can write 8 5 8 4 8 2. So simple concept is here, you can write. In the same way H cross G you can find out. Next question is, state whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the statement correctly. If P equal to Mn, Q equal to Nm, then P cross Q Mn Nm. This is true or false? So absolutely false. If P equal to Mn, Q equal to Nm, then P cross QMm, Mn, Nm and Nn. That is why wrong statement. Next, number second, if A and B are non-empty set, A cross B is non-empty set of order pair xy such that x belongs to A and y belongs to, absolutely right, true. We have discussed earlier. Third also we can discuss that if A equal to having elements 1 2, B another set having elements 3 4, then A cross B intersection 5 equal to 5. Actually it is true. So next question we are going to discuss question number 5, that if A equal to minus 1 1 and you have to find out A cross A cross A, you can simply find out A cross A cross A. That is, the elements are minus 1 comma 1 cross minus 1 comma 1. So you can write all the elements minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 1 1, and like that you can write all the triplets. Next question is, if A cross B equal to AX AY BX BY, you have to find out AB. It is given that A cross B equal to these elements. So we know that Cartesian product of two non-empty set P and Q is defined as P cross Q, PQ. P belongs to P and Q belongs to Q. A is the set of all first element and B is the set of all second element. So A is equal to AB and B is equal to XY. Simple. Next question number 7 is, if A is having elements 1 2, B having elements 1 2 3 4, C having elements 5 6, D having elements 5 6 7 8. You have to verify that A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C.
So simple to verify, we can take LHS A cross B intersection C is equal to A cross phi equal to phi A cross B. We will find out these are the elements. A cross C, we can find this. And RHS is phi, so LHS equal to RHS, we can verify. Same way you can do like that. Next question number 8 is, if A is equal to 1 2, B equal to 3 4, you have to write A cross B. How many subset will A cross B have? List them. So A having elements 1 2, B having elements 3 4. So total elements A cross B, you can look 1 3 1 4 2 3 2 4. Number of elements in A cross B is 4. We know that C is a set with number of elements in C is M, number of element in power set of C is 2 to the power M. Therefore, the set A cross B has 2 to the power 4, 16 subset. These are 5 1 3 1 4 2 3 2 4, 5 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 1 3 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3 2 4. So these are the all subsets, possible subsets. Next question is, let A and B two sets such as number of elements in A is 3, number of elements in B 2. If x1 y2 z1 are in A cross B, find A and B where x y z are distinct element. So it is given that number of elements in A is 3, number of elements in B is 2, and x1 y2 z1 are in A cross B. We know A is equal to set of first element of order pair of A cross B. B is set of second elements of order pair A cross B. So x, y, z are the element of A and 1 2 are element of B. So number of elements in A is 3, number of elements in B is 2. Clear that A is equal to x, y, z and B is equal to 1 2. Simple. Next question is, the Cartesian product A cross K A has 9 elements, among which are found minus 1 0 and 0 1. Find the set and the remaining elements of A cross A. We know that number of elements in A is P, number of elements in Q is Q, then number of elements in A cross P is PQ. So number of elements in A cross A is Na into Na. It is given that number of elements in A cross A is 9. So number of elements in A cross number of elements in A is equal to 9, number of elements in A is equal to 3. The order pair minus 1 comma 0 and 0 1 are 2 of the 9 elements of A cross A. We know that A cross A is equal to A belongs to A. Therefore minus 1 0 1 are elements of A. Number of elements in A is 3. It is clear that A is equal to minus 1 0 1. The remaining elements of set A cross A are minus 1 1 minus 1 1 0 minus 1 0 0 1 minus 1 1 0 and 1 1. So you can solve these questions like that. Next question is, let A be the elements having 1 2 3 up to 14 elements. Define a relation. A relation is defined A to A, and the relation is defined like that: x y 3x minus y is equal to 0, where x y belongs to A. Write down its domain and codomain in addition range. The relation are from A to A is given as x y 3x minus y equal to 0, x y belongs to A. Relation x y 3x equal to y, where x y belongs to A. So the set is 1 3 2 6 3 9 and 4 12. Simply you can solve. You can put different values and you can find out different value of y. So like that, elements would be 1 3 2 6 3 9 and 4 12. The domain of R is simply 1 2 3 4 domain. Set of all elements of set A and set of all elements of set B is codomain. So codomain is actually 1 2 3 up to 14. These are the codomains. The range of R is set of all second elements of order pair in the relation. So set of R is 3 6 9. You can look 3 6 9 and 12. These are the range of the relation. So simple question. Next question is, define a relation R on the set N of natural number R. R is defined as a order pair x y equal to x plus 5. X is a natural number less than 4 and x y belongs to N. Depict this relationship using raster form. Write down the domain and the range. You have to write down domain and range. So relation is defined as x y equal to x plus 5. X is a natural number less than 4. X y belongs to N. The natural number less than 4 are 1 2 3. So the set is 1 6 2 7 3 8. The domain of R is the set of all first element. You know, so 1 2 3 is domain element, and if we will talk about its codomain, 6 7 8 are codomain, and range of R is obviously 6 7 8 is range. 1 to 1 function, you know.
Now let us discuss question number 3 is a set having set A having elements 4, 1, 2, 3, 5 and a different set B having elements 4, 6, 9. Define a relation R A to B like that XY order pair. The difference between X and Y is odd. X belongs to A, Y belongs to B. Write R in roster form. You have to write in roster form. So A is given 1, 2, 3, 5 element and B is given 4, 6, 9 element. And XY difference between X and Y is odd. X belongs to A and Y belongs to B. So the possible elements order pair in set is 1, 4, because if we will subtract 1 minus 4, difference between X and Y, you can find it is what 4 minus 3 1, 6 minus 1 5, 9 minus 2 7, 4 minus 3 1, 6 minus 3 3, 5 minus 4 1, 6 minus 5 1, all are odd. So these are the subsets you can write, you can note. Next question number 4, the given figure shows a relationship between set P and Q. You can look at the figure, write the relation in set builder form and in roster form you have to write, and its domain and range you have to write as well. So you can look the figure, domain element is 5, 6, 9, codomain element is 3, 4, 5 and range is also the 3, 4, 5, 1 to 1. So according to the given picture, P equal to 5, 6, Q equal to 3, 4, 5, XY equal to X minus 2, X belongs to P, R equal to XY, Y equal to X minus 2, for X equal to 5, 6, 7. So you can write domain of R is 5, 6, 7 and range of R is 3, 4, 5. And next we will discuss question number 5. Let A be the set having element 1, 2, 3, 4, 6. R with the relation on A defined as AB. AB belongs to A. B is exactly divisible by A. Simple. R in roster form you have to write. So set A is 1, 2, 3, 4, 6. R is AB. AB belongs to A is exactly divisible by A. Another R equal to define order pairs. All order pairs we can write. Second domain of R is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6. Range of R is 1, 2, 3, 4, 6. Simple question. Now next question is determine the domain and range of the relation R defined. Relation is defined R equal to X, X plus 5, X belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5. So determine domain and range. It is the this is the question. So R relation is defined actually X, X plus 5 order pair are like that, and X belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5. So possible order pairs are 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8. You can directly put value of X, you will write 2 and next is 2 plus 5 like a 7. So this is the element. If you will take the value of X is 3, then the codomain element is actually 3 plus 5 8. In the same way, if you will take 4, then 4 plus 5 that is 9. If you will take 5, X equal to 5, then codomain element will be, its image will be 10. So domain of R is set of all elements of set A 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are the domain of R. Range of R 5, 6, 5, 6, set of 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the range and codomain as well. Now next question, write the relation R that is order pair like that X, X, Q. X is a prime number less than 10. In roster form you have to write that. So relation is defined X, X, Q. X is a prime number less than 10. The prime number less than 10 are 2, 3, 5, 7. So the set of all sets are order pair are 2, 8, 3, 27, 5, 125, 7, 343. Next question is let A is equal to XYZ and B equal to 1, 2. Find the number of relation from A to B. A to B you have to write the relation. It is given that A is equal to XYZ and B equal to 1, 2. A cross B, if you will find that, then possible order pairs are, you can look X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2. In number of elements in A cross B, that is 6. The number of subset of A cross B is 2 to the power 6, obvious. So you can find, so number of relation from A to B is 2 to the power 6. Next question, let R be the relation on Z and define as an order pair AB. AB belongs to Z, A minus B is an integer. You have to write domain and range of R. So relation is defined AB belongs to Z, A minus B is an integer. It is known that difference between any two integer is always an integer. Domain of R is equal to Z, range of R equal to integer. Now next question is, which of the following relation are function? You have to check. Give reason if the function determines its domain and range. So
set is given, order pairs are given 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1. So since 2 5 8 11 14 17 are the element of domain of the given relation having their unique images बन रहे हैं, दैट इज वाई ये रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा. यूनिक इमेज यदि बने तो वो जो होता है फंक्शन होता है. और एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है 2 5 8 11 14 एंड 17. इन सबों का जो है यूनिक इमेजेस बन रहे हैं. ये डोमेन ये है और रेंज जो है 1 है. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला जो दिया हुआ है हम लोगों का ऑर्डर पेयर्स. इसमें 2 4 6 8 10 12 14 जो है ये एलिमेंट्स डोमेन के हैं. गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन. यूनिक इमेजेस बन रहे हैं, सबका जो है यूनिक इमेजेस 2 4 6 8 10 12 14. और रेंज जो है इसका 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं. दैट इज वाई इट इज अ फंक्शन. ये फंक्शन है. थर्ड वन को देखते हैं. इसमें जो ऑर्डर पेयर है 1 3 1 5 2 5. सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 1. यदि हम लोग इसका मैपिंग यदि ड्रॉ करके देखें तो देख लीजिए सेट ए के में एलिमेंट 1 और 2 केवल हैं. और 1 का देख लीजिए 3 बन रहा है इमेज. फिर 1 का 5 इमेज बन रहा है. 1 का डबल इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा. फिर 2 का 5 बन रहा है. 1 का 2 इमेज कभी नहीं हो सकता फंक्शन के लिए. दैट इज वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन. अब डोमेन एंड रेंज के बारे में हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन. रियल फंक्शन दिया है, इसका डोमेन एंड रेंज देखना है. फंक्शन जो फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स. तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स. एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल रहा है. तो मोड ऑफ एक्स आपको पता है, मोड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है एक्स. जब वैल्यू एक्स होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है. तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स. तो सब में यदि माइनस लगाते हैं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा. जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये माइनस एक्स होगा. और जब एक्स लेस देन 0 हो तो वो एक्स हो जाएगा, बिकॉज माइनस ऑफ मोड एक्स है. तो सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर. एफ एक्स जो डिफाइन किया गया है वो एक्स रियल नंबर में बिलोंग करता है. तो डोमेन ऑफ एफ, यदि फंक्शन का डोमेन के बारे में यदि बात करें तो वो रियल नंबर होंगे. ये भी ऑब्जर्व किया जा सकता है कि रेंज ऑफ एफ एक्स जो है माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर. तो रेंज की यदि बात किया जाए, फंक्शन के रेंज की बात किया जाए तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और ये जो है 0 तक जाएगा, क्लोज इंटरवल 0. तो रेंज जो होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 लिया जाएगा. आप इसी से देख सकते हैं ये जो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. और ऐसा कंडीशन में माइनस ऑफ एक्स आता है. तो माइनस ऑफ एक्स मीन्स माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा. और ये जो है 0 तक जाता है. एंडिंग पॉइंट जो है 0 है. तो दैट इज़ वाई ये क्लोज इंटरवल 0 होगा. रेंज आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगा. और डोमेन की बात किया जाए तो डोमेन तो पूरे रियल नंबर्स होंगे. नेक्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. ये जितने भी है डिफाइन किए गए हैं ऑल रियल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन और इक्वल टू 3 है. डोमेन ऑफ एफ एक्स यदि बोला जाए तो एक्स जो है 3 और -3 के बीच में लाई करेगा. और ये एंडिंग पॉइंट -3 और 3 को एंडिंग पॉइंट को भी लेगा. एक्स का वैल्यू -3 भी होगा और 3 भी होगा, मतलब क्लोज इंटरवल -3 3. तो कोई भी वैल्यू एक्स के लिए एक्स जो है -3 और 3 के बीच में लाई करेगा इंक्लूडिंग एंडिंग पॉइंट्स. द वैल्यू ऑफ एफ एक्स लाई बिटवीन 0 एंड 3. तो रेंज एफ एक्स का बोला जाए तो एक्स जो है लाई करेगा 0 से 3 के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 3. एक फंक्शन डिफाइन किया गया एफ इज डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5. राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0 f7 एंड f. सो ईजी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं. फंक्शन का जो वैल्यू 0 दिया हुआ है इस फंक्शन में पुट कर दें, आप सॉल्व करके निकाल लें. f7 निकालना है, फंक्शन में पुट करें, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं. In the same way, is so easy question, you can solve this question, this type of questions. इसमें रेंज फाइंड आउट आपको करने हैं. फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. एफ एक्स दिया हुआ है 2 - 3x, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन. तो इसमें आपको रेंज फाइंड आउट करने हैं. तो एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन. द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ रियल नंबर एक्स ग्रेटर देन 0 कैन बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकते हैं.
देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। Thus it can clearly observe that range of f is the set of all real number less than 2. Range of f minus infinity open interval minus infinity to 2. Alter let x greater than 0, 3x greater than 0, 2 minus 3x less than 2 and fx less than 2. Range of f minus infinity to open interval minus infinity to 2. इन द सेम में आप इस फंक्शन का भी कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज अ रियल नंबर. द वैल्यू ऑफ एफ एक्स और वेरियस वैल्यू ऑफ रियल नंबर एक्स कैन बी रिटेन इन टेबलर फॉर्म. एक्स का वैल्यू 0 लें आप तो एफ एक्स का वैल्यू 2 मिलेगा, प्लस माइनस 0.3 लें 2.09, ये वैल्यू लें ये मिलेगा, डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा. तो क्लियरली ऑब्जर्व आप कर सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो कि 2 से बड़ा है. एफ एक्स का जो भी वैल्यू है वो नंबर ग्रेटर देन 2, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 2 होगा. रेंज ऑफ एफ करें तो क्लोज इंटरवल टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी. एल्टर आप देख सकते हैं एक्स को रियल नंबर लें तो अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर में दोनों साइड प्लस 2 ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो ऑब्वियस एफ एक्स जो लाई करेगा क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा. थर्ड वन जो है एफ एक्स एक रियल नंबर है. इट इज़ क्लियर रेंज ऑफ एफ इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. तो रेंज ऑफ एफ जो होगा वो रियल नंबर होंगे. तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे सॉल्व, हर एक क्वेश्चन को एक एक करके ठीक ढंग से समझने का कोशिश करेंगे. प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हुए हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे. टिल देन थैंक यू एवरीवन.